Hi dear students, hope that you all are feeling well. आज हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे ग्रो स्ट्रॉन्ग पे. द टॉपिक इज इंटाइटल्ड एज क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ स्पीच इम्पेयरमेंट. Speech impaired children are those children who possesses defective sense of speech. That is why in today's lecture we will discuss various types or forms of speech impairment. Number 1, articulation disorder. Articulation disorder is that speech impairment in which an individual fails to pronounce the words correctly. यानी कि एक इंडिविजुअल करेक्टली वर्ड्स और साउंड्स को प्रोनाउंस नहीं कर पाता है. दैट इज वाई जो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर है, इट इज ओपनली रिलेटेड टू प्रोनाउंसिएशन. फॉर इंस्टेंस, जिन बच्चों में आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम होती है वो ट्री को ट्री कहते हैं, बस को बू कहते हैं, बाय एंड लार्ज रैबिट को वैबिट कहते हैं. देयर आर सो मेनी कॉजेस which leads articulation disorder like oral motor issues. अगर oral motor organs में या हम कह सकते हैं मसल्स में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रॉब्लम होगी, it means individual will not able to articulate the sounds or words. Problem lies with the jaws, tongue, lips, by and large diaphragm. इन मसल्स में अगर प्रॉब्लम होगी, it will definitely result in the articulation problem. Articulation problem को करेक्ट किया जाता है with the help of speech therapy. That is why जो स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं वो मच मोर एक्सरसाइज उन बच्चों से करवाते हैं जिनमें आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर पाया जाता है, बिकॉज इट इज राइटली कोटेड दैट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. जितनी की ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम भी कम पड़ती है. नंबर 2, फ्लुएंसी डिसऑर्डर. फ्लुएंसी डिसऑर्डर को स्टटरिंग भी कहते हैं. स्टटरिंग सिंपली मीन्स ब्लॉकिंग ऑफ स्पीच, यानी बात करते करते फंस जाना. जब एक इंडिविजुअल बात करते करते ट्रैप हो जाता है, वी कैन से इट द पर्सन पॉजेसेस फ्लुएंसी डिसऑर्डर. या हम कह सकते हैं पर्सन में स्टटरिंग प्रॉब्लम है. ब्लॉक्स खड़ा हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ कन्वर्सेशन. ड्यू टू द ब्लॉक्स इंडिविजुअल इज नॉट एबल टू स्पीक. इट मीन्स इंडिविजुअल utterly fails to communicate what individual wants to communicate. Lot of problems are faced by those who possesses fluency disorder. कन्वर्सेशन के दौरान उनकी बात रुक जाती है क्योंकि ब्लॉक्स पैदा हो जाते हैं which does not allow to the person to address the message, to communicate. तो हम कह सकते हैं नटशल में फ्लुएंसी डिसऑर्डर is that very speech impairment in which an individual fails to speak or communicate smoothly. वो स्मूथली स्पीक नहीं कर पाता है बल्कि उसकी बात रुक जाती है और फंस जाती है, वो कन्वर्सेशन में ट्रैप हो जाता है. देयर आर सो मेनी कॉजेस which result is the stuttering problem. Why an individual stutter? क्यों स्टटरिंग होती है एक इंडिविजुअल में?
The prominent causes are genetic causes. As we know that genetic simply means transmission of characteristics from parents to offsprings. अगर पेरेंट्स में फ्लुएंसी डिसऑर्डर है या स्टटरिंग की प्रॉब्लम है, ऑटोमेटिकली ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स टेक्स प्लेस. वहां पर ऑब्वियसली ज्यादा चांस बनते हैं उनके बच्चे जो होंगे उनमें भी स्टटरिंग प्रॉब्लम हो जाएगी या होगी. इसी तरह से apart from genetic causes, there are other prominent causes which result as the fluency disorder, like neurological and environmental problems. Neurological means related to the nervous system disorder, head injuries or brain injuries. Environmental causes describes stressful situations. अगर एक इंडिविजुअल स्ट्रेसफुल सिचुएशंस फेस करता है, ऑटोमेटिकली इट इंपैक्ट्स टू द फ्लुएंसी, या सिंपली हम कह सकते हैं वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता है. इन ऑर्डर टू ट्रीट द फ्लुएंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, या हम कह सकते हैं स्टटरिंग प्रॉब्लम, स्पीच थेरेपिस्ट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल. They can eliminate the problem of fluency disorder, और हम कह सकते हैं stuttering problem. Number 3, voice disorder. It means when the problem lies with the pitch, volume, tone and other qualities of the voice. It is known as voice disorder. जब एक इंडिविजुअल बात करता है तो वो नॉर्मली दूसरों तक बात को नहीं पहुंचा पाता है, बिकॉज ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ पिच और वॉल्यूम. उसकी बात ऑटोमेटिकली धीमी पड़ जाती है क्योंकि इंडिविजुअल में वॉइस डिसऑर्डर है. अपार्ट फ्रॉम इट, क्वालिटी ऑफ वॉइस इज नॉट ऑल्सो गुड. जिन इंडिविजुअल्स में वॉइस डिसऑर्डर पाया जाता है उनकी क्वालिटी ऑफ वॉइस सही नहीं होती है. यूजुअली उनकी वॉइस हस्की होती है, स्क्रैची होती है, थ्रॉटी होती है, हॉरेस होती है. देयर आर सो मेनी कॉजेस which result is the voice disorder, like bacterial infections, neurological conditions, hormonal changes. अगर abnormal secretion of hormones की हो जाएगी, it will also affect and impact speech or communication of the person. Mental health related issues, as we have already discussed, stressful conditions में एक इंडिविजुअल स्पीक नहीं कर पाता है. इंडिविजुअल utterly fails to communicate under pressure building situations. Voice disorder can be treated with the help of speech therapy. Apart from speech therapy, we can treat voice disorder related issues with the help of vocal hygiene. जब एक इंडिविजुअल वोकल हाइजीन को मेंटेन करता है, it means individual can easily eliminate the voice disorder related problems or issues which are faced by an individual in day-to-day life. Medications, सर्जरी, बाय एंड लार्ज वॉइस अरेस्ट, इनसे भी वॉइस डिसऑर्डर को ठीक किया जाता है. नंबर 4, एप्रेक्सिया ऑफ स्पीच. एप्रेक्सिया ऑफ स्पीच इज दैट वेरी स्पीच इम्पेयरमेंट in which an individual fails to get the messages correctly due to the brain damage. अगर किसी इंडिविजुअल में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी, एस्पेशली ब्रेन डैमेज होगा, तो वो इंडिविजुअल मैसेजेस को करेक्टली रिसीव नहीं कर पाता है, एंड फाइनली इट गिव्स बर्थ टू द प्रॉब्लम विच इज नोन एज एप्रेक्सिया ऑफ स्पीच. एप्रेक्सिया ऑफ स्पीच में
individual fails to normally use the tongue, jaws, by and large lips. एक इंडिविजुअल वो सही तरीके से या राइट डायरेक्शन में ना तो वो टंग को यूज कर पाता है, ना तो उसकी लिप मूवमेंट सही होती है, और वो जॉज को भी फ्लेक्सिबल तरीके से रोटेट नहीं कर पाता है. Apraxia is also known as acquired apraxia. By and large, it is also called verbal apraxia or dyspraxia. This student's apraxia of speech is caused due to the stroke, head injury, tumor, or other illnesses. With the help of speech therapy, by and large, multi-sensory approach, we can treat problem like apraxia of speech. Number 5, Dysarthria. Dysarthria is basically speech impairment, which is resulted due to the weakening of muscles. जब एक इंडिविजुअल की मसल्स वीक पड़ती है तो वो बात नहीं कर पाता है. इट मीन्स इंडिविजुअल फेल्स टू कम्युनिकेट. कन्वर्सेशन में उसे दिक्कत आती है क्योंकि उसकी मसल्स जो है वो वीक पड़ गई है, जिसकी वजह से दूसरों तक वो बात नहीं पहुंचा पाता है. एस्पेशली मसल्स लाइक लिप्स, टंग, vocal cords, diaphragm, by and large jaw. These are important 6 muscles which are related to speech, जो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, चाहे वो मसल ऑफ लिप्स है, टंग है, वोकल कॉर्ड्स है, डायफ्राम है या जॉ मसल है. और यही मसल जो है ये कमजोर पड़ती है, इनकी स्ट्रेंथ कमजोर पड़ती है. बाय एंड लार्ज हम कह सकते हैं इंडिविजुअल फेल्स टू कोऑर्डिनेट द मसल्स, which result is the problem like dysarthria. Number 6, aphasia. Aphasia is that very communication disorder, या हम कह सकते हैं लैंग्वेज डिसऑर्डर, जिसमें एक व्यक्ति या इंडिविजुअल स्पीक नहीं कर पाता है या वो दूसरों की भी समझ नहीं पाता है. नटशल में हम कह सकते हैं aphasia is that very language disorder in which an individual utterly fails to speak and also fails to understand what others are saying. Aphasia इंडिविजुअल जो है ना वो सही तरीके से स्पीक कर पाएगा, ना वो नॉर्मल पर्सन की बात को समझ सकता है और उसकी भी बात समझ नहीं आती है एट द टाइम ऑफ कन्वर्सेशन. Aphasia is basically due to the head injury. ये स्ट्रोक की वजह से भी हो जाती है, एस्पेशली अगर ब्रेन डैमेज हो जाएगा. अपार्ट फ्रॉम इट, ब्रेन ट्यूमर and other diseases are other prominent causes which gives birth to the aphasia. Number 7, selective mutism. Selective mutism is basically anxiety disorder in which an individual fails to communicate in certain social situations. यानी कि एक इंडिविजुअल जिसमें सिलेक्टिव म्यूटिज्म की प्रॉब्लम है, कुछ सोशल सिचुएशंस में वो स्पीक कर पाता है और कुछ सोशल सिचुएशंस में वो स्पीक नहीं कर पाता है. जैसे कि हमने ऑलरेडी एग्जांपल्स दी है, पब्लिक प्लेसेस पे नहीं बोल पाता है, स्कूल पे लर्नर नहीं बोल पाता है, लेकिन घर में आसानी के साथ वो कम्युनिकेट करता है, दूसरों के साथ कम्युनिकेशन कर पाता है. आई मीन टू से यू फैमिली मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट कर पाता है. Selective mutism problem can be treated with the help of therapeutic measures. Speech therapists plays important role in order to overcome the problem of selective mutism. This was all about the today's lecture. If you really enjoyed my lecture, kindly like, share and subscribe the channel. Thank you and grow strong.